Good evening, everyone. We have just started this beautiful program called Agmon. In the series, we have with us the Dean Academics of Shri Vishwakarma State University, Professor Jyoti Rana, a person who is leading the faculties of this youngest university. Thank you so much, ma'am, for joining us here today. My first question to you would be, which all courses are being offered in your university, and are there any new courses that you are going to introduce in the near future? Thank you, Meenakshi, for conducting this interview and asking this very important question. We are introducing 28 courses and programs this time, and one program we have already launched, that is our PhD program. So total 29 programs in this session the university is offering under various skill faculties. We have 4 skill faculties here. First, skill faculty of engineering and technology. We have 10 programs in the faculty of engineering and technology. Then we have skill faculty of management studies and research. We have 7 out-campus programs under this faculty and 2 in-campus programs. Then we have skill faculty of applied sciences and humanities, and we have 6 programs under this faculty. Then we have skill faculty of agriculture, and we have 2 programs under this faculty. And apart these programs, we have offered PhD program also, which is application based, which is industry based. And as far as new programs are concerned, we are launching this year. There are 2 AICTE programs we are launching this year, MBA and MBA Business Analytics. And these 2 programs are very significant programs and very valuable programs because they have not many unique features. Like we had done an academic partnership with IIM Bangalore executive programs. And then we have a lot of industry partners in these 2 programs. Like Meenakshi, as far as programs are very offering 2 programs. They are crafted around the job opportunities. And a lot of industry partners have joined and asked in these 2 programs, like Noble organization, like Zara by AI, like Mazar, like GT, like JM Industries, like Psychotraffic, like Indotech. So these are the industry partners for these programs. And moreover, we have an academic partnership with IMBX, that is from IIM Bangalore, from where we are offering one MOOC course to our students as well. So these are the new programs. And in-campus model we are starting from this session. That means that we are offering the internships to the students. And how these internships are different from other universities, because in these internships, the students are staying there, in the industry for 8 months. And they're learning new skills, and if they perform well, they will be absorbed by the industry. So that's how these programs are very precious programs. Absolutely. Thank you so much for answering this question. That brings us to another question, that is, how is SVSU playing its role in terms of bringing the new education policy in place that has just been introduced? So how is SVSU playing a part in it? मीनाक्षी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, जो आपने NEP के बारे में पूछा और SVSU किस तरीके से इनिशिएट कर रहा है NEP को। NEP की अगर मैं बात करूं तो इसके 4-5 मुख्य बिंदु हैं। फर्स्ट, NEP बात करती है एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर। सेकंड, NEP बात करती है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, कि स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। NEP बात करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, NEP बात करती है वोकेशनल एजुकेशन की, और SVSU इन्हीं सारे मुद्दों पर काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो SVSU का मॉडल है वो ऑलरेडी ही NEP में इंक्लूडेड है, तो उसे इम्प्लीमेंट हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब हम और ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे उन चीज़ों को।
जैसे कि अगर मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करूं तो SVSU वैल्यू एथिक्स एंड वैल्यूज के ऊपर सारे प्रोग्राम्स में एक कोर्स कंपल्सरी रन करता है। हमारे सभी स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू PG कोर्सेज एक सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर कोर्स लेते हैं। So that means the university is focusing on the values and the culture as well. Similarly, vocation की बात करें, हमारा 40% 60% मॉडल, 60% हम स्किल के ऊपर बात करते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर 60% स्किल कंपोनेंट है, वोकेशनल मॉडल है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग जाते हैं। 6 मंथ्स हमारे पास रहते हैं, 6 मंथ्स हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के पास स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए भेजते हैं। तो वहाँ पर भी हम NEP को लेकर चल रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने बात की कि इंटरडिसिप्लिनरी बहुत अच्छे से SVSU अडॉप्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर में वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर एक कोर्स देते हैं। ये सारी ही फैकल्टीज के लिए मैंडेटरी कोर्स है। दैट मीन्स एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, एक मैनेजमेंट का भी पढ़ रहा है, एक एग्रीकल्चर का भी स्टूडेंट पढ़ रहा है और एक ह्यूमैनिटीज का भी स्टूडेंट पढ़ रहा है। Similarly, we have a very valuable course on entrepreneurship. We have a very valuable course on environmental science. So these courses are mandatory for every student to take. So that means the teacher who belongs to a management faculty, that teacher is going and taking the course in engineering faculty also, and that faculty is teaching that course with engineering perspective. Similarly, one faculty is going in the agriculture faculty, so the faculty member is teaching that course, the same course on entrepreneurship with agriculture perspective. So that means कि हम सारे faculties मिलकर काम कर रहे हैं। और एक और चीज मैं बताऊं आपको जो कि SVSU की बड़ी खास बात है, हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बहुत फोकस करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स हम उठाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इश्यूज के ऊपर, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी फैकल्टीज के जो भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं या उनको वहाँ से एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को भी लिया जाता है। सो दैट्स हाउ वी आर इनिशिएटिंग NEP और बाकी और दूसरे जो इश्यूज हैं, emotional issues. So we are teaching our students lot of on behavioral skills, on soft skills. That is a mandatory course in each certificate program, in each diploma program, in each undergraduate program, so that the students are learning, how they have to deal with their, their behavior, how they need to polish their behavior. So in that sense, we are truly practicing NEP and definitely हम इस एरिया में और भी बहुत अच्छा काम करेंगे। I'm sure, ma'am. As you just mentioned, कि आपके faculty members interdisciplinary studies भी कराती हैं and you're doing a lot of things in it. So how is your faculty different than the conventional universities? मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है जब मैं इस बात का आंसर करती हूँ। I really feel proud of our faculty members and how they are different from others on many parameters. The first important thing is जब भी यहाँ पर कोई faculty member join करता है, जब भी कोई faculty यहाँ इस university को join करती है, तो हम एक compulsory mandatory form में एक जनरल इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं जो कि 1.5 months का चलता है। अब उस जनरल इंडक्शन प्रोग्राम की क्या खास बात है, उसमें एक पोर्शन 15 days का टोटली इंडस्ट्री के लिए डिवोटेड रहता है, डेडिकेटेड रहता है। यानी कि जितने भी नए फैकल्टी मेंबर्स हमसे जुड़ते हैं, हम उनको इंडस्ट्री में 15 days के लिए डिप्यूट करते हैं और वहाँ पर उनको जाने के लिए बोलते हैं। उसका पर्पस ये है कि वो वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर वो समझें कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना है उनको किन प्रोसेसेस पर काम करना है। क्योंकि जब प्रोग्राम डिज़ाइन होता है यूनिवर्सिटी का किसी भी स्किल फैकल्टी के अंदर, तो हम अपनी OJT की प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं इन डिस्कशन विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स।
तो जब फैकल्टी मेंबर यहाँ पर आया, उसने इंडस्ट्री में जाकर देखा कि मेरे बच्चे ने नेक्स्ट 6 मंथ्स इन प्रोसेसेस पर काम करना है। तो जब वो क्लासरूम टीचिंग करता है तो वो उस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को वहाँ पर एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करता है, एक फाउंडेशन देने की कोशिश करता है, so that the students they understand that in terms of that industry, that how they are going and applying this concept in their industry. This is the first important thing where our faculty members are different from others. Second important thing, जो faculty members pedagogy use करते हैं, that is totally different. As I already mentioned, that our whole focus is on the project-based learning. Now every faculty member is adopting this pedagogy. अपनी क्लास में चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का फैकल्टी मेंबर है या वो फाइनेंस का फैकल्टी मेंबर है, what they do, they design application based projects for their program, and they design in the beginning of the classes when they submit their lesson plans and everything. So they design certain projects, and those projects are based on certain learning outcomes, and those learning outcomes I need not to mention, they will be the skill-based learning outcomes as we are the skill university. So they design those projects, and those projects are being done by the students. And in fact, I really feel proud of saying this thing in this pandemic also, that our faculty members, they use the technology and they design the beautiful projects to be given to the students. And they guided the students so well that students could, complete certain projects. And in this situation also, we tried our best that the students should not suffer a lot, and they should come up with certain projects so that उनको skill दी जा सके. So that's how our teachers are different. Third important parameter, our teachers are involved in the OJT process as well. Right? Some of the teachers they are being deputed as OJT in charges also. They are supervising as a program coordinator also. They are supervising the OJT processes also. So they are regularly in touch with the industry partners. And moreover, our industry partners are contributing in various bodies. So our faculty is in regular touch with them. They are understanding what is the need of the industry. वहाँ पर क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत के काबिल हमें अपने स्टूडेंट्स को कैसे बनाना है. तो ये ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर का एंड हो जाएगा या 2 साल के एंड के बाद हमारे स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में जाना है तब हमारी फैकल्टी उसके बारे में सोचेगी. नो, इट इज़ राइट फ्रॉम द बिगनिंग. The faculty thinks about the industry, about the industry's needs, about the industry's requirements, about the industry's parameters, and they guide the students, right from the beginning. So that's how the faculty is completely different from the rest of the universities. I'm sure your faculty is putting a lot of efforts in, bringing new things for these students on plate. Now let's talk about the students. What are the job opportunities available for your students? I'm asking about your students as an SVSU students. See, I tell you, Meenakshi, the mandate of the university is to impart skills which will make our students employable. That is very clear in the minds of students, in the minds of faculty members, in the minds of all the officers, all the deans, and even I would say all SVSU fraternity. And what we are doing and what are the job opportunities for the students. As you are aware, nowadays the time has changed. Now the industry does not want the certificate holders. They don't want only the degree holders, but they really want those people who can come and really work in their workshops and in the industry. Our students, they are job ready right from the beginning for the very first day. They don't require any training. And when we design our programs, how we design our programs, why I'm sharing this thing with you, because ये वहीं से शुरुआत होती है employability की. तो जब हम डिज़ाइन करते हैं अपना प्रोग्राम, आप अब हमारे प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स बहुत यूनिक हैं.
जैसे मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ, बीवॉक, बीपीएम एंड एनालिटिक्स, तो ये प्रोग्राम कहाँ से डिजाइन हुआ? ये प्रोग्राम जॉब अपॉर्चुनिटीज से ही डिजाइन हुआ। दैट मीन्स कि जब हमने प्रोग्राम डिसाइड किया, फर्स्ट वी डिड द सर्वे, वी फिगर्ड आउट कि कहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर डिमांड है, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को प्रोसेसेस में जॉब्स मिल सकती हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट तरीके के एक स्किल सेट को लेके और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है उसको कैटर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लूँगी, हमारा एक प्रोग्राम है ह्यूमैनिटीज में जर्मन लैंग्वेज का। So how this diploma in German language, had come up? Because we have seen the demand of the industries कि कहाँ पर जर्मन लैंग्वेज की डिमांड है, और उसको कैटर करने के लिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया। So that means it's not like हम लोग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, after that we are seeing the demand. No, we are seeing the demand first and then we are coming up with the programs. जैसे अगर मैं बात करूँ MBA प्रोग्राम्स की, जो हम अभी इन कैंपस मॉडल में लेकर आ रहे हैं, we have started 2 programs, MBA Business Analytics. MBA Business Analytics की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, nowadays, the people require a decision making which is, data based, and there is a need of speeding up of the whole process of decision making. So in every organization, because in every organization people are handling with the big data, so that is also required. So analytics based decisions are being required. There is a huge demand for HR analytics. There is a huge demand for marketing analytics. So we do a survey first, right? On the basis of secondary database and on the basis of primary database also. And after that, we figure it out that for what job roles we are preparing our students. And when I'm talking about the job roles, it is again a unique feature of SVSU that what we do in every program, हमारे सभी programs के अंदर हम लोगों ने QPs integrate किए हुए हैं. हमारे programs NSQF aligned हैं. That means हम जब students को पढ़ा रहे हैं तो हम हर साल में, पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक जॉब रोल के लिए उनको तैयार कर रहे हैं. So that means job opportunities right from the beginning of the program, designing of the program, I would say, that is in our mind. And when the students are, completing, they are being absorbed by the industry. अभी HDFC के साथ हमारा MWOC बैंकिंग एंड प्रोग्राम चल रहा है. अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स को HDFC ने ही एब्जॉर्ब कर लिया. सिमिलरली हमारा एक प्रोग्राम बीपीएम एनालिटिक्स के लिए चल रहा है. हमारे अभी स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट्स ने HR में ले लिया. सो दैट मीन्स जब हम लोगों ने पहले डिमांड कैटर की, डिजाइन किया प्रोग्राम, और उसके बाद स्टूडेंट्स उन्हीं पैरामीटर्स पर अगर स्केल्ड हो रहे हैं, सो आई थिंक दे हैव ह्यूज चांस ऑफ गेटिंग एब्सॉर्ब्ड in the industry. Absolutely. Being the Dean Academics of the first skill university in the country, I'm sure you must have faced certain challenges. We would want to know more about what are the challenges that you have faced and the challenges you are facing right now. Meenakshi, I personally believe that challenges are the opportunities, basically. नाम हमने अलग ले लिया उनका. Actually, अगर हम उनको देखें तो opportunities हैं. Still, I would like to answer your question in the sense you have asked. Since in the nation, the skill education has a different perception. एक अलग सी इमेज एक बनाई हुई है लोगों ने स्किल एजुकेशन के लिए. जैसे हम लोग स्किल एजुकेशन की बात करें तो लोगों का ये मानना होता है, यही सोच होती है कि यहाँ पर तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा या सिर्फ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके की यहाँ कोर्सेज होंगे. Indeed, we are running short-term courses and they can play a major role in transforming the education, not only the skill education, transforming the education system in the nation. Because जैसे पहले भी मैंने कहा कि इंडस्ट्री को
certificates only in the form of a piece of paper. They don't require. They require practical knowledge. And how the students will be getting the practical knowledge? They will be getting that practical knowledge when they will go in the industry. It's a simple thing. Absolutely. So nation में क्या एक perception skill education के लिए बना हुआ था, मैं था कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि SVSU ने उसको break किया है. So SVSU is the pioneer in that sense also, because we are offering courses right from certificate courses to PhD program. So it's not like, we are offering the short-term programs. We are offering the short-term programs also. और जब आपने new programs की बात की, तो मैं यहाँ पर mention करना चाहूँगी कि हम इस session से 31 short-term courses plan कर रहे हैं और offer कर रहे हैं, हमने launch किए हैं. 31 programs under various skill faculties, जिसमें कुछ engineering से related हैं, कुछ technology से related हैं, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, और ये 31 प्रोग्राम्स पूरे साल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर चलेंगे. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मींस कि एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही ऑफर होगा, हम लोग उसको समय समय पर ऑफर करेंगे. उसमें कोई भी आकर एनरोल करा सकता है और उसकी एनरोलमेंट डिटेल्स के लिए कोई भी हमारी वेबसाइट पर जा सकता है. तो एक ये जो परसेप्शन वाला चैलेंज है, जहाँ जिसको हम काफ़ी हद तक हमने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन ठीक है हम उस एरिया में और काम कर रहे हैं, जो कि ना केवल एक स्किल एजुकेशन के परसेप्शन को ब्रेक करेगा, रादर इट विल मोटिवेट टू अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो टू टेक द वोकेशनल कोर्सेज इन देयर यूनिवर्सिटीज. हालांकि कुछ एक पोर्शन वो कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर एनईपी के आने से सारी फैकल्टीज इसको ये सारी यूनिवर्सिटीज इसको बहुत वार फुटिंग पर लेंगी. तो वो भी मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में हो गया, जहाँ पर SVSU के पास एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रोल है कि वो अपने स्किल प्रोग्राम्स का जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है वो रेप्लिकेट करें और लोग मोटिवेट हों इसके प्रोग्राम्स में ज्वाइन करने के लिए. So, ये कहीं तक मेरे को लगता है कि एक कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जो हमें अवेल करनी है इन फॉर्म ऑफ पीपल्स लुक एट इट एज चैलेंजेस. सेकेंड चीज़ जो मुझे लगती है कि नॉर्मली जो फैकल्टी ज्वाइन करती है, फैकल्टी क्योंकि बिकॉज SVS इज द फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी, तो फैकल्टी मेंबर्स के माइंड में इनिशियली इस तरीके के मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेकिन हम उसको भी ब्रेक कर रहे हैं. हमारी जो इंटरव्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस है that is very rigorous, and we are incorporating all those elements so that the people who are coming in, they should come up with that mindset that they need to change the classrooms into the labs, basically, that how they can provide the practical experiences. So these are the two important things, and the third important thing, when the student gets into the university, तो आपको पता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनके माइंड में एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी की क्या परसेप्शन होती है कि स्कूल के एक बड़े बाउंड्रीज से निकलकर और बड़े रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट से निकलकर वो लोग एक यूनिवर्सिटी में जब आते हैं, सो दे फोरसी लॉट ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, और यहाँ हम उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स देते हैं. लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने में कि हमारे स्टूडेंट्स विदिन 7 days, विदिन 8 days, उसको बड़े अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं, एंड यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर पर्सनैलिटी. सो दे आल्सो फील प्राउड कि वी आर लर्निंग अ लॉट, rather than other students when they talk to their friends, after 6 months. So our students are far better. I'm sure the students are in safe hands, looking at what you have been doing, and now that we have talked about what you have been doing, what are your future plans, ma'am? For future plans, as I already mentioned to you, that SVSU got a status of affiliating university as well. And SVSU got a status for, assessments also. Assessment and certification for all vocational programs in the state. And the university is,
pioneer in recognizing prior learning as well. These are the pillars of SVSU, and these are the very important areas where SVSU has taken the initiative. And in all these initiatives, academics plays a very, very important role. And we have the consultancy also with us, where the all the academic fraternity and all the faculty members, our deans, our professors and associate professors, they are continuously working in the area of making the education as a quality education. And when I talk about the quality education, we want to set the parameters in terms of skill education is the future of India. And when I say the skill education is the future of India, that means that a lot of responsibility we are owning on ourselves in terms of providing a lot of successful experiences to the nation. तो हम लोग अपने future plans में we will be focusing on our short-term courses. Why? Because short-term courses, they come into the mandate of the university, which university is adopting from United Nations Academic Impact also. मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी मेंबर बनी है यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट का, और मेंबर बनने के साथ ही यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी 147 कंट्रीज में हो गई है एंड इन 1500 academic institutions in the world. And UNAI has 10 principles, and they tell their all members to adopt minimum one principle. और मुझे बड़ी खुशी हुई वो लिस्ट देखकर, जब मैं देख रही थी तो उसमें 3 एक्टिविटीज ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अडॉप्ट कर रही है, जिसमें फर्स्ट ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल. In education for all, that means we are already introducing the short-term courses. 31 courses we have already introduced, और हम उसको different frequencies के ऊपर introduce कर रहे हैं. This is one thing. Second important thing, they say capacity building. Can you believe it that the university has, only this university has a separate and unique department of pedagogy and capacity building. So that means how much we are concerned for pedagogy and capacity building. No other university in the nation has the department of pedagogy and capacity building. That means हम लोग लगातार उस तरफ काम कर रहे हैं. Capacity building in terms of students, in terms of organization, in terms of faculty, in terms of our administrative staff. So the one department is working on that. Pedagogy department is working on the pedagogy of the teachers which they are adopting in their classes. So that is again that is again in the future plans कि हम लोग किस तरीके से वो pedagogy को implement करें so that we can become a successful experience for the other universities as well. Third important thing, NSQF aligned programs. जैसे मैंने पहले बताया, we are the university. We are the only university in the country, which is incorporating the NSQF aligned job roles. And our all programs are based on QPs, and they are providing education against job roles. So हम इस एरिया में बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं, और हम जल्दी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें सारे के सारे चीज़ों को जो हमने अलाइन किया हुआ है उनको बेस मानकर उनके प्रोजेक्ट्स डेवलप करके we will come up and we will be working in this area. So these are the basically future plans and research which we have already started in terms of PhD. Our PhD is also very unique. How our PhD is unique, that no single university has the provision of industry mentors. हमारी PhD में जो student जो candidate enroll करता है उसके लिए एक industry mentor भी assign करना जरूरी है, और उसकी mentorship में industry based problems identify होती हैं जिसके ऊपर एक research scholar काम करेगा. So what is the purpose of that? Because if the scholar will work
on industry-based problem. So definitely that is going to solve a problem for the industries. So that will be a very, very relevant PhD. So these are the future plans that we'll be focusing on. Thank you so much, ma'am. Academia is always the backbone of any academic institution. And today, I was in a discussion with the Dean Academics of Shri Vishwakarma Skill University. With this, it brings me to the end of the session. Thank you so much, ma'am, for sparing time, giving us so much of information, and I'm sure students are in safe hands. This is Meenakshi Kaul signing off for Agman for today's session. Thank you very much. See you soon.